हेलो एंड वेलकम बैक। आ गए हैं हम आपके पास वापस से लेकर वीकली राउंडअप। मार्केट ने बहुत अच्छी रैली दिखाई, बैंक निफ्टी हो चाहे आईटी इंडेक्सेस ने अच्छे मूवमेंट दिखाए हैं। और अब फाइनली हम आ गए हैं वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सीरीज। मई की सीरीज बहुत लंबी होने वाली है और मई की सीरीज कैसे स्टार्ट होगी, अप्रैल की सीरीज कैसे एंड हुई, उसके बारे में जानने के लिए, समझने के लिए हम एज ऑलवेज जाते हैं एके के पास। हाय, गुड इवनिंग। Good evening, Rachit. How are you? I am good, just that today I'm not so happy for obvious reasons. And during the day I even became more sad. But then ending होते होते थोड़ी सी बाहर, थोड़ी सी खुशियां, थोड़ी सी तेजी वापस लौटी। क्या हो रहा Yes. है, कहाँ जा रहे हैं? Okay. Firstly, we are connecting with everyone after 2 weeks. So I am going to give a kind of a brief description so that people can connect because 2 week पहले और अभी में बहुत फर्क है. So once when we last recorded this video, if you remember, वो Trump or the whole focus was Donald Trump and tariffs. And how we ended up that video was saying that this week, in 1 week, the markets went down 1,000 points and went up 1,000 points. So एक फ्राइडे से दूसरे फ्राइडे तक हमारा स्टार्टिंग और एंडिंग लेवल बिल्कुल सेम था. बीच में 1,000 पॉइंट का मूवमेंट अप एंड डाउन हो गया था, जो कि the main reason was, Trump giving out some statement and then China responding with something which looked like at that time, which looked like could trigger a very, very ugly trade war. It was वो सारे indications वैसे ही थे कि एक ugly trade war हो सकता था. Cut to what happened, this tariff pause happened for 90 days. At least for India, it happened for 90 days. So it becomes thinking things have moved ahead for 90 days. We don't know, and we are hopeful that then some statements also came in that in within 90 days we are hopeful to reach a trade agreement with the US. So the markets have kind of digested the fact that जो ये harshness थी इस tariff की, उतनी हार्श सिचुएशन हमें फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. टू स्टार्ट विथ 90 डेज का हॉल्ट तो लगा ही दिया है. तो अब आर वरी इज आफ्टर 90 डेज क्या होगा. 3 महीने तो आराम है, और 3 महीने में ये होप है कि वी विल रीच सम अग्रीमेंट. इफ यू रिमेंबर, आई इवन टोल्ड यू इन द वीडियो दैट we should be focusing also on our domestic results rather than keeping our focus only on global tariffs and this that. So what happens is that our market is a reflection of how our companies are performing, how our economy is doing. If it is a known fact that we are going through a growth and consumption slowdown, so we must keep a very strict eye out there. अब ये पूरे टैरिफ के उसमें व्हाट हैज हैपेंड इज Q4 रिजल्ट्स थोड़े साइडलाइन हो गए. अगर आप देखें तो Q4 रिजल्ट्स थोड़े साइडलाइन हो गए हैं. इनका इतना इम्पैक्ट पड़ा नहीं है मार्केट में, एंड एवरीबॉडी इज एट्रीब्यूटिंग थिंग्स टू द होल टैरिफ. ओके, नाउ व्हाट हैज हैपेंड, जो लास्ट हम कनेक्ट किए थे उसके बाद आज 2 वीक हो गए. ये 2 वीक में हमने व्हाट about not 10 because all weeks are more or less truncated weeks except for this particular week. So we are looking at 8-9 trading sessions, correct. ये 9 trading session में हमने additional 1,000 point increase कर लिया. So from a 23,300 we fall down to 22,300, and we go up to 23,300, and then we hit another high in the next 2 weeks. We hit another high around 24,300 odd, and then there is a little retracement जो आज हमने देखा, correct. Yes. आज हमने वो retracement देखा, ठीक है.
तो अब ये हो क्या रहा है? सी, टेक्निकली markets have become on the very strong buying side. अगर आप यू नो 1 महीने के चार्ट्स देखेंगे, अगर आप 3 महीने के चार्ट्स देखेंगे, और इवन आप 6 महीने के चार्ट्स देखेंगे, तो वो जो पैटर्न फॉलो कर रहा था, वो हायर हाई वाला पैटर्न, सॉरी लोअर हाई वाला पैटर्न जो चल रहा था, जो एक बेरिश ट्रेंड कंफर्म कर रहा था, वो ट्रेंड में ब्रेकआउट हुआ जब वो 23,000 के ऊपर बंद हुआ, एंड इसके बाद ये सेकंड कंसेक्यूटिव हायर हाई दे दिया है बाजार। This I'm talking about only technical. So technically, it has become it has gone into the buy zone now. It is not in the sell zone. Good. So does that mean that we are actually heading towards a slower new quarter, or is there any turnaround that we should expect in coming time with the new financial year beginning and that 12.75 lakh rupees worth of income tax benefit and RBI trying to help with the liquidity? Are we expecting a turnaround in this, or it will be on the similar lines? देखिए Rachit, the thing is that figures related to inflation are coming in control. Okay. Now ये इससे क्या होता है, आरबीआई को लीवे मिल जाता है रेट काटने का, क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में. ओके, दिस इज ऑल्सो इंडिकेटिव कि रूरल एंड टीयर 2 टीयर 3 डिमांड माइट इंक्रीज, इन्फ्लेशन अगर कम होगा तो. ओके, द फिगर्स दैट हैव कम, द फिगर्स ऑफ इन्फ्लेशन, द फिगर्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी, ये जो फिगर्स आए हैं ये एनकरेजिंग फिगर्स है. हो सकता है रिकवरी आ जाए, बट आई विल रिकवरी भी क्या है इसमें, इकोनॉमिक्स में क्या होता है, इकोनॉमी में क्या होता है, रिकवरी यू शिफ्ट होती है, मार्केट में रिकवरी वी शिफ्ट होती है. मैंने अगर आपको आज बोल दिया कि ये 100 रुपए की चीज 400 रुपए का वर्थ है, इसमें अंडरलाइंग वैल्यू है, तो एक हफ्ते के भीतर वो 400 रुपए नहीं हो जाएगा, तो 350 रुपए तो हो जाएगा. ग्राफ विल शो लाइक दिस. पर अगर मैं आज आपको बोलूं कि वी विल रीच एक्स अमाउंट ऑफ जीडीपी इन 2027, वो 2027 तक धीरे 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 ऐसे जाएगा. देयर ग्राफ विल गो दैट. सो वी हैव टू बी वेरी पेशेंट and we have to be very careful in distinguishing how market is moving and how economy is moving. Market will always try to have that extra froth on economy. अगर मैं बोलूं कि 7% या 8% जीडीपी होता है, 8% जीडीपी होता है, हम 8% के हिसाब से अभी कर देंगे सब कुछ, पर मैं बोल रहा हूँ 8% जीडीपी पहुंचने में 4 साल लगेंगे सर. वो 4 साल आप टाइम तो दो धीरे 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 करने को, हम अभी से पहुंच जाएंगे. देन व्हाट विल हैपन कि वो ट्रैजेक्टरी में 8% के बैठेगा नहीं, तो फिर शार्प करेक्शन हो, क्योंकि बैठ नहीं रहे. सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. एंड नेक्स्ट वीक में चलते हैं इन द सेम फ्लो. आई वुड लाइक टू से that last 2 weeks have been brilliant, actually brilliant for the buyers in the market. Okay, like I said before, technically speaking, we are in the buy zone. I would not suggest anyone to go short at this level. Okay, even after today's fall or 23,800 तक टच कर दिया, that is a crucial bottom side. Okay, टच करके वापस ऊपर आया and it has given a closing above 24,000, which is a big psychological mark. As per the charts, what I am seeing, जो higher high का जब पैटर्न बन रहा है, 24,650 to 24,700 will be a resistance. If it sustains above that, I am not saying crosses. It can cross, but will not sustain. If it sustains above that, then I'll have to look at it in a different way. I might even go beyond 25,000. पर मैं अभी कुछ नहीं बोल रहा. अगले वीक में नहीं लग रहा है मुझे कोई ऐसा ट्रिगर नहीं लग रहा है अगले वीक में जो बाजार को ऐसा ले जाए. ठीक है, रिलायंस का इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, रिलायंस इज ड्यू टू गिव इट्स रिजल्ट today, later in the evening. So so that will be a good thing to watch out for Monday morning. Okay, नीचे में आज का लो जो टेस्ट किया है 23,830 के आसपास,
That will be your support zone. I don't see it breaking again in the absence of any strong negative triggers. I do not see that breaking. If अभी जैसे मिक्स बैग आया रिजल्ट ये पूरे वीक में, हाँ, अगले वीक में we see a plethora of bad results, then it might, if we see अच्छा, a plethora of bad results, disappointing results, there is a chance that we might break 23,800. All I'm trying to say is that ये जो tariff का जो wild movement था, it is settled down. We should now focus on, what our companies are doing. We should focus on what banks are doing. Banks की भी अगर provisioning बढ़ रही है, अगर tight हो रहा है, banks can post a good amount of profit. That is okay. But margins, and it's across sectors. What I am noticing now, the profits are being posted. The upside is there. The profit growth is also there. But margins are stressed for every company. तो अगर मार्जिन स्ट्रेस्ड है तो दैट इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ कंसर्न, बिकॉज मार्जिन अगर आपकी स्ट्रेस होगी तो ले दे के वो कॉस्ट कटिंग पे ही जाएगा. So दैट does विल बी that द mean for that coming week, which is again, I believe, a truncated week because या 1st of May being a holiday, we again have a 4 days trading session, and the range that we're looking at is 23,800 to 24,700. This is the या wide range that we'll be focusing upon, and if the way we have closed today, we have closed closer to the lower part of the range. So does that mean that if we come somewhere near to 23,800 levels, we should go long and wait for the higher levels to come? I would, honestly, Rachit, if I have to personally take a trade, I'd I'll be happy and confident to go long above 24,000. Rather 24,100, 24,150 के ऊपर मैं लॉन्ग सोचूंगा. अगर ये 24 के पास जा रहा है, 23,800 के पास जा रहा है, तो एनीथिंग कैन ट्रिगर अ डाउनसाइड. माय पॉइंट इज, अगर 23,800 हिट करता है, कोई खराब न्यूज आती है और 200 पॉइंट 300 पॉइंट नीचे चला जाता है, हिट करता है, तो बहुत सारे स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो जाएंगे विच विल फर्दर पुट इट डाउन. तो आई एम गोइंग टू बी, मैं अगर आपको 800-900 पॉइंट की रेंज दे रहा हूं, तो जो बीच के 300-400 पॉइंट है मैं उसी में ट्रेड करूंगा. मैं ऊपर ज्यादा मैं लॉन्ग नहीं करूंगा, नीचे ज्यादा मैं शॉर्ट नहीं करूंगा. Got Ideally, it. anybody should keep a broader range in their mind, not try to get top, not try to get bottom. बीच के 300 पॉइंट में 400 पॉइंट में खेलना है तो खेलिए, अगर आप ट्रेडर हैं तो. अदरवाइज नो. अगर मैं आपको वो इतना वॉलेटिलिटी है, और अगर मैं आपको बोलता हूँ कि 300 पॉइंट की रेंज देता हूँ, इफ आई कैन, इन दिस मार्केट, इफ आई एम एबल टू से कि अगले वीक में ये सिर्फ 300 पॉइंट के बीच में ही बाजार घूमेगा, तब तो मतलब आप समझ सकते हो कि मैं कितना बड़ा ज्ञानी होऊंगा with that confidence. But with this volatility, it's extremely impossible to contain markets in a 300 point range. It's not possible. आज अगर आप anybody is, who's doing an FNO trade, अगर ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं, अगर रुक, I'm not saying कि 23,800 हिट करेगा. अगर रुक शॉर्ट का है और मैं पुट खरीद लेता हूँ 23,800 का, तो मेरे को 23,800 का थोड़ी ना वेट करना है. मेरे को तो यहाँ से 100 पॉइंट नीचे गया, मेरा पुट का वैल्यू ऊपर गया, मेरे को, दैट इज द होल स्ट्रेटजी. सिर्फ जो अगर उस डायरेक्शन में जाए तो पोजीशंस में M2M प्रॉफिट आ जाए, आप निकलिए. मतलब दैट्स द राइट थिंग टू डू. यू कैनॉट वेट फॉर इट टू गो टू 23,800. वो इवेंचुअली हो जाएगा. एटलीस्ट आई personally, what I trade, I do not wait for the end game. I finish it off as soon as possible. As soon as you get profit, book, and the range would be somewhere in between 23,800 to 24,700. And in next week, we might have all the results in place, and then we'll be in a better position to discuss as to where the market is heading. Chaliye, Right. as always, it was amazing talking and learning and knowing as to where the market is headed next week. Hope to see you next week, and
चलिए, हैव अ हैप्पी वीकेंड। Happy weekend to you too. Bye bye. बाय बाय।